Hi, very good evening, guys. You've seen me enough today on Facebook. So, in the afternoon when we had gone for a drive in Karve Nagar for clothes, I did mention something that we are doing a small exhibition that is organized by Yashashvi Mahila Sanstha. As always, Sarika More, she's the one who organizes such kind of activities for women who are, they are doing some small scale businesses. Most importantly, they don't have a lot of way wherein they can earn also, and they don't have exposure where they can sell or buy products. This is something wherein we're trying to help people who are making this stuff very hygienically, guys. I have been to their places. I have seen the work they do. They do it very beautifully, very hygienic, very clean, and these are the people who really need our help. We buy so many chutneys. We go to D-Mart. We go to I think every mall we go to a lot of stores. We buy pickles. We buy stuff like that. It is always convenient to help people who need it. So I'm going to go live. I'm going to introduce you to everyone. They will tell you the product. They'll explain it to you. If anyone wants to buy, आप इस नंबर पे मुझे पिंग कर सकते हैं. I will take your orders. I'm already taken a lot of orders on behalf of Koshish. So please give me more so that this will be helpful. Before that, I would like to show you. This is the logo for Yashashvi Mahila Sanstha. That is the founder and owner of this particular NGO is Mrs. Sarika More. She's doing an amazing job. This is all about her. So this is all about the exhibition that we have held today. It was very sweet of her to put Koshish as well a part of this thing, and very sweetly I was amazed to see that she's written my name along with Mark as well. So that's Mark. Are you happy about it? Very, very. You feel proud as someone has put your name, isn't it? Very good. Okay, so that is the, if you guys can see, that is the thing. Now we can start. Okay, so before I start, I would like to tell you that this is an amazing pickle. I myself, Sarika ma'am, हमने बहुत सारा order किया है ना. So I have already ordered for my family. मैम आपका नाम? अनीता मोरे. अनीता मोरे जी. अनीता मैम ने बहुत अच्छा पिकल बनाया है. I think this is the one that I have ordered, mostly me and my family members. So मैं एक बार I will just quickly take you through the pickles and then she'll give you more idea. मैम ये कौन सा वाला अचार है? आप मराठी में भी बोल सकते हैं. कैरीचं लोणचं. कैरीचं. ओके. हां, म्हणजे गाव म्हणजे खेड्यामध्ये बनवतात तसं. तुम्ही एकदा उघडून दाखवू शकता. हां. So this is the first pickle. Okay, looks very delicious, smells very nice. मैम इसका कितना प्राइस है? हे 60 रुपये 70 रुपये किलोचं सांगा. 280 ठीक है. मैं प्राइजेस आपको बाद में बता दूंगी गाइज. दे नीड टू कैलकुलेट इट, बट दिस इज वन पिकल. ओके, यू कैन बाय इट इन केजी, हाफ केजी, 250 ग्राम भी लोग ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? सो आप टेस्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं. दिस इज द सेकेंड वन. वील ओपन दिस. प्लीज हेल्प स्मॉल स्केल बिझनेसेस गाइज. दे रियली वर्क हार्ड. सो मॅम काय वेगळं काय आहे ह्यात? याच्यामध्ये सुकवलेला मसाला आहे. ओके. याच्यामध्ये कमी मसाला आणि कमी तेल. ओके, तो इसमें जो है गाइज सुखाया हुआ मसाला डाला है और इसमें कम तेल है और क्या मसाला भी थोड़ा कम है. सो इफ यू डोंट लाइक वेरी स्पाइसी यू कैन गो टू दिस वन. इफ यू डू लाइक अ लिटिल बिट स्पाइसी विद लिटिल ऑयल यू कैन गो विद दैट. वो दिख रहा है यहाँ पे ऑयल है, यहाँ नहीं है. गाइज स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को बाय करना है तो. ये तीसरा है ना? हे कैरीचंच आहे. अच्छा. पण हे जरासं आंबट, गोड आणि तिखट असे तीनों हैं. ओह वाव. So someone who likes a combination of sweet, sour and tikha can go for this one. Looks very nice, and believe me, I'm here guys, it smells amazing. Very nice. Thank you ma'am. ये पंजाबी अचार है. नाही, उत्तर प्रदेश. हाँ, पंजाब.
उत्तराखंड वाला ये हमारा अचार है। सो दिस इज द ब्लैक अचार गाइस। हम लोग तो खाते ही हैं सारे नॉर्थ इंडियंस, सो आप लोगों को पता ही है। दिस इज 1 second, she'll be wanting to show you this guys। सारिका मैम, थैंक यू सो मच हमको बुलाने के लिए और फिर ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये स्टॉल्स आपने फ्री में दिए हैं सबको। दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। सी दिस इज़ द पंजाबी अचार आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हमारे यहाँ बहुत बनता है नॉर्थ में, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। 250 ग्राम वट एवर गाइज यू वॉन्ट, इवन ऑफ लिटिल क्वान्टिटी फॉर टेस्ट वी कैन गिव यू दैट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो ये सांडगे है राइट? ओके, पंजाब में मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली। अच्छा ओके, या महाराष्ट्र में सांडगे। okay, so guys sandge is also there। See they have this small Burmese as well that you can actually get, and if you want you can get this big size also, half kg, 1 kg, 250 gram, 500 gram, everything is available। आज ये आपने फ्रेश बनाया है, ये अचार कौन सा है मैम? गाजर, फ्लावर, हिरवी मिरची, हाँ। अदरक, लसूण, अदरक, लहसुन, लिंबू, मिर्ची, गाजर आणि flour। Okay, so this is today guys, they just made it today and I guess only 40 rupees, worth it। हे मी एक घेऊन जाणार आहे, मी काफ़ी कुछ लेके जाऊंगी लेकिन जाते वक्त लेके जाऊंगी। दिस इज अगेन सांडगे, अगेन दिस इज इन पैकेट्स। दिस इज 30 rupees 1 packet and kilo I can let you know guys। this is very important, कड़ी पत्ता पाउडर actually it's for 20 rupees only। मैम इससे क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा बताएंगे क्या? मराठी सांगा। हां, हे तेलामध्ये टाकून लावू शकतो आपण। कढीपत्ता जेवणामध्ये केसांना तेलामध्ये टाकून लावू। काय होतं त्यांनी म्हणजे? केस गळती थांबते। ओके ओके। आणि जेवणामध्ये मुलं कढीपत्ता काढून टाकतात वेगळा। हां 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 हां। आणि जे आयुर्वेदिक याच्यामध्ये आहे ओके, ते मुलांना ते मिळू शकत नाही, Right. त्याचा उपयोग होऊ शकतो। परत डायबिटीससाठी पण चांगले, शुगर कंट्रोलमध्ये राहते, बीपी साठी पण चांगले, पोटासाठी पण चांगले, म्हणजे आयुर्वेदिकच कढीपत्ता। so guys just one thing I would like to say, this is just 120 rupee packet। they have made fresh kadi patta powder। this can be used in many ways। it is good for BP, it is good for your digestion, it is good for your sugar। most importantly, lot of children they remove kadi patta when they are eating their food, so this can be added so that they get that benefit। also most importantly I was just told that you can mix this with oil and you can apply that to your hair, it will help you for hair loss। so I'm certainly going to take this as well। okay, कारले की चटनी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था गाइस। दिस इज अ पैकेट दैट इज फॉर 15 rupees। it's good enough, so you can buy one and taste and see how it tastes। so this is कारले chutney, 15 rupees। then we have Javas chutney again, that is for 15 as well। we have groundnut chutney for 15। we have kadhi patta chutney guys, I have tasted this, it's a little I don't know, I can't tell you the taste, but it's very yummy, I liked it। and then we have if you don't want a bigger half kg and all, you can order for 2-3 सांडगे packets। so this is there। इस पे आते हैं बहुत ज़रूरी है कोल्हापुरी मसाला ना, सोलापुरी। गॉड प्लीज एक्सक्यूज मी गाइस, यू नो आई एम अ लिटिल टायर्ड टुडे। सोलापुरी। सो ये उन्होंने घर में बनाया है। सारिका मैम इज ऑलरेडी यूज्ड इट एंड सारिका मैम टोल्ड मी इट्स गोना हैव वेरी गुड रिव्यू, सो आई एम डेफिनेटली गोना ऑर्डर। दिस इज 250 grams। ये कितने का है मैम? ये 150 rupees अ पैकेट। दिस इज 250 grams। इट्स गुड इनफ। आपको अगर टेस्ट करना है तो आप एक बार ले सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारे पास हाफ kg 1 kg के भी पैकेट्स हैं, ठीक है। सो दिस यू कैन बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल मसाला लाइक चिकन मटन, है ना, उसके लिए। सोलापुरी नॉट कोल्हापुरी, आई अपॉलोजाइज। ओके, सो दॅट इज अबाउट यू। थँक्यू सो मच मॅम, थँक्यू। काही ऑर्डर असतील तर मी मॅमकडे देते। आय विल क्विकली शो यू अगेन। दीज आर द पिकल्स, दोज आर द थिंग्स। दिस इज करी पत्ता, all the chutneys and everything is there। okay guys, hi, hello ma'am। तुमच्याकडे काय आहे? गव्हाची कुरडई। हाँ, सो यहाँ बहुत लोगों ने ऑर्डर किया है, हमने भी काफ़ी टाइम में ऑर्डर किया। ये गेहूं की है राइट, और ये आप घर में बनाते हैं? अच्छा, चावल। okay, so guys this is the difference।
This is the one that is made out of wheat. Now if you see the ones that are made out of wheat, they are like a whole, you know. But the ones that are made out of rice, you will see most of them are like, it breaks usually. That's how it is. There is a pricing difference also. Ma'am, किती रुपए kg आहे? हे 300 रुपये किलो, 250. ओके, ठीक है कोई बात तो ठीक है. आपको मैंने बता दिया गाइस, कुरडई है व्हीट वाला और राइस वाला. आपको जो वाला चाहिए होगा यू कैन टेल मी, वी कैन ऑर्डर. हमने ऑलरेडी ऑर्डर किया है और ऑर्डर्स भी करेंगे. ये क्या है मैम? अच्छा, कुरडई. ओके, नाव विल कम टू मसाला. हेलो मॅम. हां, तुम्ही सांगताल तुमच्या मसाला काय काय आहे ते? माझ्याकडे कलरची मिरची पावडर आहे. ओके, आम्ही घरीच तयार करतो. थोडं जरा. लवंगी मिरची पावडर आहे. ओके, एकदम तिखटाला ही जास्त आहे. तो बहुत तीखा है ये. बहुत ओके तीखा है. ओके मसाला आहे आपल्या घरच्या पद्धतीचा मसाला आहे. भाजीसाठी, तरीसाठी, मटण वगैरे सगळ्यासाठी यूज होऊ शकतो. ओके कोल्हापुरी मसाला. ओके. मिरची पावडर आहे. ओके. थोडीशी कमी तिखटमध्ये येईल. अच्छा. ही इंदोर धना पावडर आहे. धनिया पाउडर. ओके, इंदोर धना कोरिएंडर पाउडर गाइस. ओके, का ब्लैक कलर का नहीं जो मसाला रहता उसमें क्या है? क्या ये वाला क्या? वो देसी- काला कलर जो मटन में भी कभी कभी डालते हैं, चिकन में. ओके इंदोर धनिया पाउडर. वो ओके. देसी धने रहते ना, हाँ पता उसका है. बनाया ये. ओके. ये चाय का मसाला. So guys, this is a tea masala. Most of the people sometimes now are preferring to have tea masalas. I don't know how it tastes though, but you know we're going to have one and see. This is the tea masala, so you can go for that as well. गरम मसाला. Okay, जीरे पाउडर. okay. नारळाची चटणी. अच्छा हाँ, ओके. नारळ की चटनी. हल्दी. हल्दी और जवस की चटनी है. अच्छा, ठीक है. Thank you so much. Yeah, I'll just. Guys, the reason I'm showing you like this is so you can take a screenshot. Thank you so much, ma'am. Okay. सांगा. लेडी फ्रेश कंपनीतनं आम्ही सेल करतो. चांगलं आहे. खाज वगैरे. So guys, I will. They are a little shy around this, but I will talk to you about this. This is a sanitary napkin that they are selling now. This is basically something wherein these women are also working on this. They get it on the company at a good price to sell, so that they can have their living. So you know this is price. प्राइस हे आहे 30 रुपयाला स्मॉल साईज आणि लार्ज घेतलं तर 42 रुपये. 42. 42. So guys, the one that is this is the medium one. Okay, that is for 30 rupees each. It has around 8 pads, and this is the little larger one, and that is 42 rupees, right? So guys, we anyways order a lot of vape, whisper, stay free, give business to people जिनके पास already पैसा है. That's not cool. You should buy this and help small businesses. Please do that. Thank you so much, auntie. Purses. So we have these purses around 30-35 rupees each. This is very pretty. We've got many of them. So in case if you like to give it to someone. So these are the ones. You can send him the location and tell him to come. These are the ones that we've got. Even you can use it for any kind of rituals, haldi, kumkum and stuff like that. 25. Okay, 25 rupees, guys. So great. So you, Sarika ma'am, just try to be nice enough to give us a little more discount. Guys, this is cool because you know we give it to our maids. I gave it to my maids when I bought them. And even for haldi, kumkum or any kind of activity at home, you can always give these kind of purses. ये एक डिजाइन है, ऐसे बहुत सारे डिजाइन्स हैं जो वो दे सकते हैं. Hello ma'am. Okay, so very special product. Okay guys, this is something I'm definitely going to try. Ma'am, क्या है, कौन सा तेल है exactly? कोरफडीचं तेल आहे. किसका तेल है? कोरफड. एलोवेरा. एलोवेरा. ओके. और उससे क्या होगा? त्याच्यामुळे तुमच्या केसातलं कोंडा जाईल, केसांची ग्रोथ वाढेल आणि जर फोडी वगैरे येत असेल केसामध्ये डोक्याला तर त्या सुद्धा जातात. तो ये आपने खुद घर में बनाया है? घरी बनवलेलं आहे. क्या प्राइस है एक बॉटल का? 250. 250 rupees. So guys, हाँ? 200 ml 250. So guys, this is something that they have made at home. This is 250 ml. No, 250 rupees, 200 ml. This is ideally made of aloe vera. However, they might have some other extracts in there. This helps for your dandruff. It helps for your hair growth. And most importantly, what happens is because of dandruff, we have small boils in our hair, irritation. This can be used. हे पण घेऊन जाते मला गरज आहे. Oh my god, my friends are like what? So this is the bindi section, guys. I mean, obviously
In case if you think you want a little bigger bulk just to gift people, you can always, you know, support them rather than just picking it up from anyone else who has a shop. So these are the small stuff they have kept. Hello ma'am. नमस्ते So these are the stuff that they have, guys. See, if you want for any purpose or you want to gift it to your maids or your people around or children, you can always contact me. I will tell Sarika ma'am and we can pick it up in bulk. Ma'am, एक मिनट में यहाँ पे भी दिखा देती हूँ इनको. So this is like basic, you know, you have your eyebrow pencils and kajals and stuff like that. ये क्या है मैम? ये एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, हाँ हाँ. उसको घसने के लिए अलग से साबुन होता है. ओके. इससे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बर्तन, बहुत अच्छे लगते ओह नाइस. और क्या प्राइस है मैम इसका? हैं. ये 10 रुपीज़ का है. Guys, only for 10 rupees, can you believe it? It actually looks like a cake ना माँ. अच्छा हो गया आपने बोला साबुन है, नहीं तो मैं खा लेती. No, it isn't. नीम वाला साबुन है, सिर्फ नीम से बना हुआ है. अच्छा, तो दिस इज मेड आउट ऑफ नीम और इससे क्या एल्यूमिनियम वाले बर्तन तुरंत निकलते हैं जस्ट फॉर 10 रुपीज. वाओ, थैंक यू सो मच मैम. बहुत सुंदर निकलते. क्या मैम? व्हाइट वाले जो कपड़े होते हैं तो ये कपड़े भी धो सकते हैं बहुत इससे? अच्छे निकलते हैं. ओह नाइस, वेरी नाइस. Guys, there are small stuff that you can pick up actually. It isn't like something that you buy from outside. You can pick it up from here. There's small panties for kids here. So this is the lingerie section. बोलो सारिका मैम. नमस्ते. आज यशस्वी महिला सामाजिक संस्थेच्या वतीने आम्ही जो काही स्टॉल लावलेला आहे त्याच्या मागे स्टॉल लावण्याच्या मागे एकच काम आहे. मैम इधर आते हैं हम. आपके वो मैं वहाँ चाहती हूँ. आता परत बोलू. हाँ बोलिए ना, कोई बात स्टार्ट नहीं. करो. हाँ बोल सकते हैं. ये दिख रहा है ना आपका लोगो दिख रहा है. हाँ. यशस्वी महिला सामाजिक संस्था संस्थापक अध्यक्ष मी सारिका मोरे. आज जो आम्ही छोटा स्टॉल लावलेला आहे त्या स्टॉल लावण्याच्या मागे एकच काम आहे की ज्या काही माझ्या आता महिलांनी स्टॉल लावलेला आहे त्यांना घर बसल्या काम भेटावा आणि त्यात वृद्धा दिदींची तर खूपच मदत होते कारण आम्ही दिदी जे काही ऑनलाईन शेअर करते ते आम्ही नाही करू शकत पण दिदींनी जे काही केलं आणि त्याच्या माध्यमातून जर का महिलांना ऑर्डर वगैरे भेटत असेल तर खूपच चांगलं आहे. आज आम्ही हा छोटा स्टॉल लावला आहे पण आणखी दिदींच्या मदतीने मला असं वाटतं फ्युचरमध्ये आम्ही खूप मोठे स्टॉल लावणार आहे. डेफिनेटली. ॲक्च्युली काय झालंय, कधी कधी काय असतं आपण वीडियो टाकतात तर त्यांना मिस होतं. लाईव्ह टाकलं की बघतात और बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर भी किया है. तो छोटा नोटिस था, अभी ऑर्डर आते जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग घर में रोज़ यूज़ करते हैं. तो हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की है कि लेट्स नॉट बाय मॉल से या यहाँ से उनको हेल्प करेंगे. तो जितना होगा सारिका मैम, और आप बहुत 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 ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो. मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ.